permission. Shri Kartikeya Sharma, matters raised with permission. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on this important issue. There is concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. I have reserved my ruling. I'll come with it. The House will have the benefit of it. There are saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body to the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that Mr. in Sharma, situations where a family... Mr. Kartikeya Sharma, now start. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this important issue, which is concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. There are umpteen saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body of the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that in situation where a family is unable to pay hospital medical bills, hospital staff will often refuse to release the body of the deceased until the payment is made. The Geneva Convention and the UN Commission on Human Rights make it legally binding, provide for explicit provisions relating to the proper management, dignified treatment, and disposal of dead bodies, as well as respect for the need of families. Sir, earlier answering to my question, the Honourable Minister informed the House that there is no such legal provision authorizing any hospital to withhold dead bodies in the lieu of pending bills. Therefore, I urge this august House to deliberate on the situation that will bring some relief to the mourning families. I also request the Minister concerned to evaluate and issue guidelines for immediate release of the dead bodies and subsequent period for clearing the dues. Suggestively, penalties for the defaulting hospitals and that violate the said guidelines should also be incorporated for ensuring strict compliance. There is a growing consensus at international level that all patients must enjoy certain basic rights. In other words, the patient is entitled to a certain amount of protection to be ensured by physicians, healthcare providers, and the state, which have been codified in the various societies and countries in the form of charters of patients' rights. The patient rights charters, as approved by the National Council of Clinical Establishments, is available in public domain and needs to be promoted in good spirit. Further, we can collectively implement a few steps. Spread awareness about the Patient's Rights Charter and the rights that families of the deceased have in such situations. The Patient Rights Charter enlists 17 rights of patients, including the right to information, whereby every patient has a right to adequate relevant information about the disease, right to record in reports, the right to emergency medical care, the right to informed consent, the right to confidentiality, the right to second opinion, the right to discharge of patients or receive the body of deceased from the hospital and more. Enforce hospitals to display the charter in important areas of the hospital so that accountability is held. Treat violation of the charter with firm laws, as non-release of dead bodies is treated akin to violations of habeas corpus. Create a national helpline to assist the mourning families in such unfortunate times, and create a national corpus fund. Sir, and more importantly, let's incentivize the hospitals and doctors to community so that they encourage and follow the Patient Rights Charter. Thank you very much, sir. Shri Pramod Tiwari. Shri Pramod Tiwari. साहब एक मिनट मैंने वो उठाया और आपको कहा भी इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है और सारी चीजें I have reserved it. You have had your say. नहीं रिजर्व तो साहब रिजर्व के बाद ही आप अडजन करने वाले हैं नहीं सर कहाँ रूलिंग होगा No, you will have it during the course of the day. अब तक को during course of the day, before I rise for the day, you will have a ruling perfect on this. Kindly Come on, Pramod Tiwari, you want to avail the opportunity? 2 बजे के onwards में जो भाषण हुआ 110 pages nothing will go on record, sir. I gave you opportunity. No, sir, how many times I will see it? I have read it. You have sent a communication. I have gone through it. I have heard everyone carefully. I will give a ruling on it. Shri Pramod Tiwari. Sir,
आज ही अर्ली मॉर्निंग आज ही करेंगे। आई हर्ड अर्ली मॉर्निंग। चलो Sir, चेयरमैन we'll साहब, change it. मैं आज एक I'll correct if there is an error. मैं I'll एक look into अत्यंत it. सर अब शुरू होगा ना मेरा 3 मिनट। Your time starts now, Mr. Pramod Tiwari. थैंक यू सर फॉर विशिंग मी। सर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात में चिंता व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज हम अपने देश में धर्म के राजनीतिकीकरण के उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं और ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक खतरा पैदा करता है। एक देश के रूप में हमने हमेशा दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। हमारे धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है और ये हमारा संवैधानिक, धार्मिक और व्यक्तिगत दायित्व है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता का संदेश दिया है, समानता का संदेश दिया है, उसे कायम रखा जाए और उसका पालन किया जाए। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और एकता की अपनी सदियों पुरानी संपत्ति को दांव पर न लगाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक देश के रूप में मिलकर काम करें और एक बार दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ समझाएं। जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो राष्ट्र प्रथम होता है, दल द्वितीय होते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि अपने दल के हित को साधने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह अपने पार्टी के हित में करेंगे तो निसंदेह देश के लिए घातक होगा। मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपसे चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि संविधान के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता पे लोग कायम रहें, धर्म का दुरुपयोग न करें। गांधी का MP-led guidelines। मारी हिरण कडाली। धन्यवाद उपसभापति महोदय। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 1993 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि को क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति के निर्माण हेतु विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को अंतर्गत धार्मिक प्रकृति को कार्य या धार्मिक पूजा को स्थानों, परिसरों को भीतर और धार्मिक आस्था समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर होने वाली कार्यों के लिए इस निधि के प्रयोग में अनुमति नहीं है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मठ और मंदिर में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हवन, भजन, कीर्तन और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए निधि देने का प्रावधान है, लेकिन पर्याप्त भूमि के अभाव के कारण कोई अवसरों पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता। धार्मिक पूजा स्थलों पर पर्याप्त भूमि होती है, लेकिन संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिबंध के कारण संसद अपने क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का विकास और उनके परिसर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं कर पाते। मेरा सरकार से निवेदन है कि दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को निरस्त किया जाए और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर और मठों में सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक केंद्र और अन्य विकास कार्यों के लिए संसद स्थानीय
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से निधि देने पर लगे हुए प्रतिबंध को तत्काल हटाओ जाए। नमस्कार। धन्यवाद कटारी जी। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिकंदराबाद कैंटोनमेंट एरिया। Thank you, Deputy Chairman, sir. This special mention is regarding the merger of Sikandrabad Cantonment Board with the local Municipal Corporation of Hyderabad, sir. Sir, Sikandrabad Cantonment Board covers a vast expanse of 40.13 square kilometers located in the heart of Hyderabad, a prime location, sir. It is widely recognized as a lung space of Hyderabad. But recently, the demand has been arisen for merger of this SCB into Greater Hyderabad Municipal Corporation, sir. Thus, SCB has a high proportion of B2 land, sir, constituting approximately 30% of the land composition. B2 lands primarily comprise private lands and state government lands. And over a time period, number of colonies and bastis have come up, and nearly 3 lakh population are residing in this cantonment board, sir. Sir, this, as urbanization progresses rapidly, the population within the cantonment limit has witnessed significant growth, necessitating urgent focus on addressing civil infrastructure within the cantonment area, sir. It is worth noting that the participation of the then TRS government in terms of infrastructure development, extending grants and aid was negligible, and it was totally now neglected by the then government, placing the entire burden on the SCB administration, sir. So the residents of cantonment consistently express the need for improved civic amenities. Cantonment board diligently pursues this whenever funds become available. According to the complexity of the situation, road closures enforced by the army and local military have exacerbated the issues and grievances, sir. So the demand for merging in board with the GHMC was raised by the then party ruling. It was totally politically motivated, sir. The main hidden agenda behind is the open lands and the surplus lands left in the cantonment board. So they are being designated as the green spaces for Hyderabad. The availability of surplus lands such as OGB, B3, B4 category lands within the SB cantonment provides unique features, sir. The politically motivated conspiracy behind this is to grab that open lands. So now what I request is the main demand of the local residents to increase the FSI. आपका समय हो Sir, गया. I only request the government of India to... Dr. K. Lakshman, it's not going on record now. Sri GVL Narasimha Rao, demand for investment of around 500 crores for installing infrastructure for filtering of sewage water in Visakhapatnam city. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I'm happy to say that as a resident of Visakhapatnam, there is something to be very proud of. Visakhapatnam is one of the cleanest cities in the country as per Swachh Sarvekshans. In the last 3 years, it has ranked 4th every time. I would like to thank, first of all, Honorable Prime Minister and the central government for giving huge funds under various central schemes like Swachh Bharat, Amrit, Smart Cities Mission, G20 City, and many other ways. I think when the city was ravaged by Hudhud, it was central government and Honorable Prime Minister Modi ji who stood by the city. So there is so much to be proud of about Visakhapatnam. But there is also a concern, a rising concern about the high level of ocean pollution, which is possibly not evident to the public, but it has a huge negative adverse implications for the future. So, some statistics, as per Parliament reply given to me in Rajya Sabha, Vizag's coastline, Visakhapatnam's coastline has receded 3.5 kilometers, which is 22% of the total coastal length in the last 30 years. And also there is reduced availability of marine life for the fishermen who go for livelihoods. This is all happening because of the
the development of a dead zone in the city, which results in death of ocean life. So this pollution is caused by more than 20 drainage canals which directly flow into the city without being treated. This untreated sewage water is creating a lot of, it's not only making the some parts of the beach, some parts of the coastline ugly, it is also impinging on the health of fishermen who live on the coastal line. It is killing the marine life. Therefore, I call upon the central government to assist the city of Visakhapatnam by formulating any project and to help the state government some kind of a financial assistance over a long-term basis with an investment of close to 500 crores to make this city survive in the longer run, to help the coastal line to remain alive, and also help fishermen in their livelihoods. The blue economy of Visakhapatnam is dependent on this factor, and I call upon the central government to assist, and I call upon the state government to get into action. Thank you. Not to really sleep over it and to understand the dangers of... माननीय विजयपाल सिंह तोमर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के पश्चात पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और इसका कारण है जब रोजगार सृजन होता है तो गरीबी उन्मूलन तीव्रता से बढ़ता है। इस उपलब्धि में बड़ा योगदान देश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, देश में औद्योगिक माहौल बेहतर करना, कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी स्वयं हर रोजगार सृजन के कार्यक्रम में रुचि लेते हुए प्रति माह 70,000 से लगाकर 1 लाख नियुक्ति पत्र युवक युवतियों को देते हैं। रोजगार देने के कार्यक्रम में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का बड़ा योगदान है। गत माह मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रोजगार मेले आयोजित किए, जिनमें एक में 14 और एक में 18 कंपनियाँ आईं, और कंपनी भी अच्छी, जैसे एयरटेल है, ICICI बैंक है, श्री राम पिस्टल है, और उनमें 700 से अधिक युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मेरा विचार है देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय एकीकृत बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। देश में नवयुवकों और युवतियों को रोजगार मिले तो देश के उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी तीव्रता आएगी। महोदय, देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट सेल की यदि स्थापना की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से चाहूँगा कि ये सब संस्थान, चाहे विश्वविद्यालय हों, डिग्री कॉलेज हों या प्रशिक्षण संस्थान हों, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक माह 1 रोजगार मेले का आयोजन करें और उसमें युवक और युवतियों को ताकि रोजगार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, माननीय उपसभापति जी, ई फाइलिंग सेंटर की स्थापना का मेरा विषय है। आपदा में अवसर कोरोना काल में वर्चुअल पद्धति निकल कर आई। 4,20,937 केस सुप्रीम कोर्ट में 2.63 करोड़ जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुने गए। वादकारी का हित सर्वोच्च और सस्ता और सुलभ न्याय सरकार का सिद्धांत। 9 मार्च 2023 को न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का एक पत्र सभी हाई कोर्टों को गया ई फाइलिंग के संबंध में। कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी का उत्तर अनुकूल आया। भारत सरकार ने 7100 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की 4400 ई फाइलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और तेलंगाना में यह सुविधा प्रारंभ है। 25 हाई कोर्टों में 689 केंद्र चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने रिट पिटीशन संख्या में 6 अक्टूबर 2023 को कहा है कि आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, no high court shall deny the access to video conferencing facility or hearing through the hybrid mode to any member of the bar or litigant desirous availing to such facility. उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी अपने पत्र संख्या 18 अक्टूबर 2023 को जिला न्यायालयों को आदेश जारी करके 1 नवंबर 2023 से ई फाइलिंग सेंटर शुरू करने का आदेश दिया। मेरठ में उस क्रम में 25 अक्टूबर को 1 नवंबर से ई फाइलिंग सेंटर चलेगा, ये आदेश भी हो गया। लेकिन अचानक रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
पत्र संख्या 3542 सीपीसी ई कोड दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को केप्ट इन अबाइंस लिखकर उस हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भारत सरकार ने उसके अधीन पत्र लिखा था, तमाम उच्च न्यायालयों ने उसमें सहमति दी है, उच्च न्यायालयों में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय तेलंगाना में हुआ, करोड़ों केस सुने गए कोरोना काल में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 6 अक्टूबर 2023 के 15 दिन बाद कोई कोर्ट, हाई कोर्ट मना नहीं कर सकेगा, यह स्थगन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। इस दृष्टि से मैं सदन के समक्ष रखकर भारत सरकार से न्याय मांगना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी जी। माननीय श्री नागेंद्र राय, डिमांड टू इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ राजबंशीज एंड कमातापुर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। Sir, I demand to include the history of Rajbangshi and Kamatapur in the NCERT textbook. The Rajbangshi community has a rich and heritage and culture which has been inherited from the ancient civilization. The Rajbangshi community is their own dialect, culture and way of the living. The culture reflects the humbleness, peace and harmony with nature. His Highness Maharaja Jagadevendranath Bahadur was the last Maharaja and the greatest warrior beside the Bir Sujya Vishwa Mahavir Chilarai, the younger brother of Maharaja Naranarayan. Naranarayan was the greatest hero in the world. In December 1950, President of the Greater Kujbar People's Association had requested the Government of India in conclusion of the glorious history of the Rajbangshi and Kamatapur in the NCERT textbook for the benefit of the student, linguists and benefit community. In reply to this, in assurance was the given, then that is the matter would be placed before the textbook development committee of still now. History of Rajbangshi was not published. The great leader of Rajbangshi, their love, affection, the development for the people need to reach on the present and future generation so as to under the Indian history. I therefore request the central government to include the contribution, the Rajbangshi and Kamatapur in the textbook of the NCERT. Thank you. Thank you, Sri Nagendra Rai ji. Mani M. Sanmugam, concern over delay in increasing minimum monthly pension of EPF pension to ₹9,000. Thank you, Chairman Sir. I raised to concern over the delay in increasing minimum monthly pension of workers under Employees Provident Pension Scheme. Sir, huge amount is lying with the Ministry of Finance as unclaimed amount. As many workers shift from one company to another, their EPF contribution remain unclaimed. This is the position up to the year of 2014. In 2014, Universal Account Card was introduced with the result. The employees, workers continue to get the EPF subscription irrespective of the change from one company to another. And the corpus fund of the pensioners who expired between 95 to 24 is also there. The government should merge corpus fund lying with the government department and unclaimed amount to enhance pension fund under the EPF scheme. I demand that the government should enhance immediately the minimum monthly pension under EPF scheme to ₹9,000 as demanded by various trade unions. Hence, the amount from corpus fund and the unclaimed amount which belong to the workers should be merged with the pension fund for the purpose of EPF scheme so that the actuary valuation will go up. Similarly, the formula for calculation of EPF pension does not reflect the reality like actuary and the funds lying with it, which is prejudicial to the pensioners. Therefore, the calculation formula should be revised in the favor of pensioners.
for giving higher pension under the EPF pension scheme for those who contribute more money. The existing formula calculation pension will not work, and therefore it needs to be revisited and revised. I would therefore demand that government should call a meeting of Central Trade Union for consultation so that the viable formula may be worked out for calculating the pension under EPF pension scheme. Thank you, sir. Thank you, Shanmugam ji. Dr. Amar Patnaik ji, demand to include Ho, Sambalpuri, Saroa and Mundari languages. Thank you, sir. Sir, Odisha occupies a very special position in the tribal map of India with 62 ST communities and 13 primitive tribes. They constitute 22.43% of the total state population. With this, Odisha has one of the highest percentages of tribals in India. So there is a long-standing demand of the Odisha government to include Ho, Mundari, Bhumish, Kui and Saura languages in the 8th schedule of the Constitution. The exclusion of these languages denies tribal linguistic communities access to education in their native tongue, perpetuating their marginalization. For instance, the Ho language spoken by approximately 10 lakh tribals in Odisha and Jharkhand, and Mundari language spoken by over 6 lakh people of Odisha and Mundari tribes are deserving candidates for constitutional recognition. So Honorable CM Naveen Patnaik, Odisha CM Naveen Patnaik had written a letter to the Union government in 2014 in this regard. However, their demand remains unheard. The incorporation of these languages into the 8th schedule will contribute significantly to their preservation and dissemination. This inclusion will catalyze various initiatives such as publication, content creation, and will also establish an ecosystem of conducive to research and studies focused on their preservation and promotion, fostering a robust platform for scholarly engagement in these areas. Sir, moreover, on September 16, 2022, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji had also written a letter to the Union Tribal Affairs Ministry reiterating their long-standing demand for inclusion of 169 communities in the state's scheduled tribe list. In December 22, again a delegation of BJD MPs met the Union Tribal Affairs Minister and demanded inclusion of all the 169 tribal communities of Orissa in the list. However, despite the state government and Honorable CM's persistent requests and demands, not all the tribal communities have been included in the Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders 2024, passed in the Rajya Sabha yesterday. Only 53 have been included out of 169, which had fulfilled all the conditions and all the processes. For the remaining tribes, Honorable CM has been impressing on having joint meetings of all the involved ministries and state government to expedite the process. Even after the prioritization of 9 proposals by a Ministry of Tribal Affairs task force in 2014, many recommendations remain unaddressed. Thank you. Sir, Orissa has already taken initiative in this regard by constituting special development councils. Thank you. Mani Sri Biplav Kumar Dev. Mani Biplav Kumar Dev. Thank you. महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय के अवगत करना चाहता हूं कि एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला त्रिपुरा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहां नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 4/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां व्यस्त घंटे के दौरान 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संभालने की क्षमता है। 20 चेक इन काउंटर है एवं 3 मिलियन यात्रियों को वार्षिक क्षमता है। अगरतला चिटागांग मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान कर दिया है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एवं ग्राउंड लाइटिंग सुविधा मौजूद है। रनवे की लंबाई 286 मीटर है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 4/1/2023 को एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क चेक पोस्ट घोषित कर दिया है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में घोषणा की प्रतीक्षा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय में माननीय नगर विमान मंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट का विषय गृह मंत्रालय का क्वेश्चन आवर आता है। माननीय ऑनरेबल मेंबर, क्वेश्चन नंबर 46, श्री मिथिलेश कुमार, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर।